ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जो हमारे आज के गेस्ट हैं, ही बिलोंग्स टू द टॉप मीडिया एंड मार्केटिंग एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन माइंडशेयर। और माइंडशेयर पाकिस्तान से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माइंडशेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर आगा ज़ोहैब। तो हमारे शो का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले वी वुड लाइक टू नो योर सक्सेस स्टोरी कि आई एम श्योर इतनी आपके पास अचीवमेंट्स रही हैं सो फार। यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइंडशेयर व्हिच इज अमेजिंग। लेकिन आपका ये कामयाबी का सफर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, सक्सेस स्टोरी इज टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड। I have had a pleasant journey, alhamdulillah. Wow. A rewarding journey, and that's how I would put it. Okay, great. And I would not put it as a success story because success and failure are very relative terms. Yes. And all of that. So, my journey started off from a very small town. I grew up in Sakhar, in a small town near Sakhar, Rodi, and that's why that's where I belong to. Oh, nice. And so my early education was from there. And uske baad, then after my intermediate, I moved to Karachi for higher studies. Studied from Zabist, my BBA and MBA. Worked from Zabist. Was looking for a job, in fact looking for an internship. Got an opportunity. I was very lucky, and I have been, alhamdulillah, and all praise to Allah. When I was looking for an internship, I got an opportunity. This was while I was doing my BBA. I got a full-time job opportunity. And आपने कब decide किया कि आपको marketing majors ही pursue करना है? देखिए, मुझे कुछ और समझ नहीं आता था। honestly अगर मैं बताऊं तो कुछ और समझ नहीं आता था। I was decent at maths and finance not really. I barely passed those courses, but now it's part of my JD, so I have to learn, and a lot of it has been on-job learning. Of course. But back in school, I was okay and decent at maths. I was very interested in biology and social sciences, etc. But then what doctors do and what engineers do on job did not really excite me. As a kid, I wanted to be a sports person, and that was the thing that interested me the most. Oh, nice. Not necessarily studies, but फिर उसके बाद I think a lot of people around me and a lot of as you put it as success stories, and at that time I used to look at them as success stories in front of me, had done their bachelor's and master's in marketing, most of them. My cousins, my elder cousins, even other people, I would watch interviews and all of that. So most of the CEOs and the successful people had one thing in common. They were good at marketing, they were good at communication, and I was relatively better at my communication skills. From class 9, I started participating in speech and debate competition, and I would get that comment that I have a creative or an imaginative mind, which is again, you need logical mind, and you need creativity for marketing. So I got that guidance, and I got those advices. I think it's great to see कि बहुत early stage पे आपको एटलीस्ट ये पता था कि आपको क्या नहीं करना है और क्या आपका इंटरेस्ट कहाँ था। एटलीस्ट वो क्लैरिटी आपको जरूर थी एज अ किड। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस पे थी कि क्या नहीं करना है और उसके बाद बहुत कम ऑप्शन रह गए थे, और उसमें लकीली एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई चोज मार्केटिंग. आई माइट नॉट हैव मेड इट टू वेयर आई हैव मेड इट हैड इट बीन एनी अदर फील्ड. Oh yes. I think मेरा भी एक पर्सनल बिलीफ है कि मार्केटिंग के जितने भी प्रोफेशनल से अब तक मैंने इंटरैक्ट किया है, दे नेवर रिग्रेट देयर डिसीजंस ऑफ परस्यूइंग मार्केटिंग, व्हिच इज अमेजिंग. लोग हर फील्ड से बोर हो जाते हैं, एक पॉइंट आता है जब उनको सब कुछ रिडंडेंट लगता है, लेकिन हम मार्केटर्स को ऐसा कभी भी नहीं लगता है. That's true. It's always exciting, challenging. We always look forward to our work, which eventually becomes our passion. So the credit goes to the marketing field that we all belong to. True. All right, lovely. तो आगा फिर आपने बैचलर्स मास्टर्स ज़ाबिस से किया, and then you started your internships. कहाँ से? Which companies did you intern at? It's a funny story. I'll cut
cut it very short. No worries. So you'd like to know that whole story. So I was in the 4th semester of BBA. Okay. And we had to do an internship. It was not mandatory. I could have waited for another year. Yeah, but it was advice कि आप, और काफ़ी लोगों ने advice किया था कि आप अभी ही कर लो, so you get a hang of things, you know. So I was chatting with a friend and he was a year senior, and Humair, my friend, so उसने कहा कि जी I'm working at Allianz EFU, okay, and they're looking for people, why don't you come, and they serve very good biryani also. So in those days that was the carrot and that was the incentive also. Oh, yes. I love biryani and all that. So I mean that was the starting point. It was a casual discussion. He said, and I said, why not? Let me see. You know, we read marketing. We spend so much time reading books and marketing tactics. Let me see how it is in the real world. So I came and I think I worked at Allianz for 2 days only, and I decided no, I don't really belong here. And I went back to uni, and I was having a chat with a friend. I am not really liking it. So he said, there are opportunities just next door. Zabis is situated at Clifton. Yeah. And 90 Clifton उस time पे होता था. And then साथ में 2 तलवार पे there was Daily Times and World Call. ठीक है, तो वो group पूरा उसी time पे start हुआ था. So he said they're taking walk-in interviews. Why don't you just go there and apply? And it's near uni and you live nearby too. So that's going to be very convenient. And one of the biggest pain points for me also was the commute time. The commute, traveling, yeah. Allianz EFU is just around ये Share FSL पे ही है, तो it was difficult because I was taking a few summer के courses too. Okay. So I walked in and the receptionist asked me, are you here for an interview? I said, yeah. So she sent me in. They took my interview and they didn't know and didn't realize, I don't know what happened. They offered me a full-time job. Oh, right? Wow. So that's how it all started. And later they found out, you know, I mean, later we discussed. You were there for an internship and you got a job instead. Yeah. Wow, that's amazing. So we laughed at it, but I got... But you happily took it and... तो and then you started working. फिर आपने वहाँ पे अपनी job start कर दी. And while you were studying at Zabis too as a student. Yes, I was in the 4th semester of my BBA. So 4th semester में ही पहली job, that's amazing. Students के लिए तो ये बहुत ही बड़ी blessing होती है, achievement होती है इतनी early age में, क्योंकि इस time पे लोग internship के लिए struggle कर रहे होते हैं and you got a job instead. Wow. I have nothing but I mean I cannot take any credit for it. Allah की तरफ से वो एक blessing थी, and I was looking for an internship. So but I got an opportunity and I did not think twice about it. I did not think कि यार ये कैसे होगा, मेरी तो morning में classes होती हैं तो मैं कैसे करूँगा. I said बिस्मिल्लाह करते हैं, start करते हैं, देख लेंगे. और ऐसे ही हुआ. I went to the BBA coordinator. I talked to her. You know, थोड़े से मजाक किया, थोड़ा सी बात की, थोड़ा explain किया कि इतनी opportunity है, I really want to try and all of that. थोड़े बहाने भी बनाए. And she agreed, and I'm really thankful to her also that she agreed, and she allowed me to take classes in the evening. So another good thing happened to me very early on in my career, in my uni life, was कि मेरी कोई एक fixed class नहीं होती थी. Post the 4th semester, I was taking classes with different, you know, sections. As per your convenience. My convenience. कि मुझे अगर ये course करना है, मैं तो कभी PhD और MPhil की लोगों के साथ ले रहा हूँ. So कभी as a BBA student also, कि कभी मैं वो subject को मैं follow करता था and not a particular class and section. That helped me. I socialized with I got to know a lot of people. Plus obviously questions हर जगह different होते थे. A lot of seniors. Sometimes with my juniors also. Oh yes. Sometimes I had to take courses with say BBA के मुझसे छोटे section या मेरे से छोटे पिछले semester के लोगों के साथ. So that was a lot of fun. I think अभी interview से पहले हम यही बात कर रहे थे कि Zabis as an institution, why are we so loyal to it, is because हमें हमारी convenience के हिसाब से सारी you know वहाँ की opportunities
फैसिलिटीज, सर्विसेज, क्लासेस सब कुछ मिल जाती थी और बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती हैं जो इतना लेवरेज देती हैं अपने स्टूडेंट्स को, बट दैट वाज वन रीजन व्हाई Zabist always felt like home. I had a great experience, and I'm sure other universities can also boast of that. Yes. But I've only studied from Zabist, and my experience has been very, very pleasant. Oh yes, same here. So हमारी बात हो रही है आगा ज़ोहैब से, who is the managing director of MINDSHARE पाकिस्तान. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे आगा से और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं आगा ज़ोहैब, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइंडशेयर पाकिस्तान. सो ब्रेक पे जाने से पहले आगा ने हमें बताया कि किस तरह से सरप्राइजिंगली उनको अपनी पहली जॉब मिल गई एंड ही स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली व्हाइल ही वाज ओनली इन हिज 4th सेमेस्टर इन Zabist, व्हिच इज अमेजिंग. सो आगा, दैट वाज योर फर्स्ट जॉब और उसके बाद से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करें. व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट? उसके बाद फिर कहाँ कौन सी कंपनीज आपने ज्वाइन की? व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन जब आपको इतनी अर्ली एज में जॉब मिल गई थी? So, our family's reaction, my father was the first one I told. I told him that I got a job and he was very happy. And I got a decent salary offer too, which was later slashed because मेरा bachelor's नहीं हुआ था. तो वो कम हो गई थी salary because I did not meet the minimum education requirement. But I told him the figure that I was told in the first place. So he was super excited. But with that came a disclaimer कि अब से आपकी पॉकेट मनी बंद है. Oh no. So but I think that was a good thing. I think उसके बाद फिर फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया कि oh he has become an adult now, he is making money on his own, तो अब हम इसकी हेल्प क्यों करें with pocket money या एक्सप्लॉइट क्यों करें further? Seriously पहले भी लेते थे and I think I have a lot to thank. I have to be thankful to my family and my parents in particular for the support that they have provided me. Amazing. So, लेकिन ये interesting था because I became independent also. I financial independence भी उस time पे आ गई थी. At a very early age, I was only 19 or 20 I think at that time. So that was good because then I had to take care of myself. I had to manage my finances. अपनी हर चीज़ की मुझे एक रखना पड़ता था कि किस तरीके से मैनेज करना है and all of that. So that was a good experience and I was getting that hands-on experience of life, real life, which I heard, post आपके education आपको मिलेगा तो आपकी एक journey पहले से ही वो start हो गई. So that was really बहुत nice. अच्छी बात है. Yeah. So उसके बाद Daily Times का experience मेरा बहुत अच्छा रहा because the role itself was very interesting and exciting. I was in the corporate sales department. Okay. And primarily मेरा काम होता था to meet the CEOs or the top guys, and sometimes the marketing managers or mostly CEOs of different companies or HR heads. I mean, it really varied from company to company. Okay. The leaner the company was, the higher the it was easy to reach to the higher to the top guy and all of that. Yes. So the decision makers, A for subscription, B supplements उस time पे were a thing and we were very important to, exactly. तो उस industry को हम कोशिश थी. I mean, it was my boss's vision at that time and the editor's vision at that time कि जी इसको हम पूरा revive करेंगे और उसको research report के form में लाएंगे, tabloid format में लाएंगे. So all of it was very exciting for me. I mean, I'd never worked and suddenly, I was being told कि यार let's revolutionize and let's change the industry dynamics. So I was all pumped and geared up and excited and I thoroughly enjoyed it. And I was meeting all professional people. I looked very young. I remember एक जगह एक shipping company थी, वहाँ मैं गया and I met the CEO and the owner of the company. He looked at me, he smiled and he said, Tom and Jerry देखते हो? So
And I loved Tom and Jerry as a kid, and But why did he ask that? because he was a Tom and Jerry fan himself. Oh. So he heard me talk and he was smiling and laughing कि यार ये छोटा सा बच्चा इतना मतलब बोल रहा है और इतनी प्रोफेशनल बातें कि आपका जी बड़ा आपकी पोजीशनिंग में ये फ़र्क पड़ेगा एंड सप्लीमेंट्स में आपकी रिसर्च की ये इंसाइट्स हैं. एंड आई वाज यूजिंग jargons. I don't even remember what jargons I was using, but I was, I was a student, so I was kind of flaunting my BBA and uski apni sari learnings and all. And I was also being guided and trained by my superiors and my bosses कि जी this is the pitch and all of that. So I was very confident, fearless. I mean, credit goes to the age. So I was fearless and I was talking, and he looked at me and in his head he must have thought कि यार मतलब ये शक्ल में और बात में थोड़ा सा फर्क है. तो so he ended the discussion with यार टॉम एंड जेरी देखते हो. I said no, I mean 10 साल 15 साल पहले तक देखता था. He said मैं अभी भी देखता हूँ. So join me. Oh nice. Actually that show is a stress reliever. लोग देखते हैं केस स्टडीज में आता है कि जब आपको थोड़ा सा टाइम ऑफ चाहिए for 5-10 minutes, watch an episode of your favorite cartoon and you will feel better. Absolutely, I can relate to it. You see, I mean, now I've been working for the last 17-18 years. You'll be surprised to know I'm a big time gamer. I play games. I play with my kids. I play with my office colleagues. I don't watch cartoons, but I'm into gaming and I'm into sports. So I would still, I mean, if somebody comes who looks like, he would be into gaming and I'm in a mood to have a game, I might ask him or her, okay, let's have a game. Are you in a mood or something? So, of course. So life should be fun, Definitely, definitely. So फिर आपने Daily Times के बाद फिर which company did you join? So उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था क्रिएटिव एजेंसी जाने का. अच्छा. Because I always thought कि क्रिएटिव एजेंसी में भी strategy department was really what suited my skills, right? But मुझे कोई रखने के लिए तैयार नहीं था. I gave a lot of interviews, but I did not get an opportunity. I applied to multiple creative agencies at that time. Okay. एक तो strategy department में बहुत कम लोग होते हैं. Yes. बहुत लिमिटेड होता है. Limited resources. और उस टाइम पे तो strategy का इतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं था और रखती भी नहीं थी. क्लाइंट सर्विसिंग होता था और क्रिएटिव होता था कि यार ठीक है क्लाइंट सर्विसिंग वाला ही कर लेगा, वही स्ट्रैटेजी पे वो लोग ही काम कर लेगा. अब तो फिर भी आपको स्ट्रैटेजी के लोग ज़्यादा मिलते हैं. सो उस टाइम पे it was like कुछ एजेंसी के पास था तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जिनके पास नहीं है तो हम क्यों बनाएं. Exactly. And so I pursued it for some time, but I couldn't get into it. Then I went to a PR agency. It was a very, very brief stint with CMC. But okay. A very enriching one. I learned a lot from there. Javed Iqbal Saab was the CEO. Learned a lot from that experience. It was brief, but the commute time really, hindered. And I was. It's a little far. It's far. It's at Shara FSL. At that time, I used to live, I think, near Clifton. तो वो मुझे commute time बड़ा क्योंकि I was a student, mind you. मतलब I had to juggle and I had to manage both studies and education. So I ideally wanted to work at a place which was closer to my uni and where I lived. So the commute time was not. Was one of the reasons. So you left that place. Yeah. So I got an opportunity at MINDSHARE. Okay. And which year was this? This was, I think, 2005 or 6. Oh, amazing. Yeah. So MINDSHARE was technically your third job. Yes. And the rest is history. Yeah, and MINDSHARE, yes. I mean, MINDSHARE, I fell in love with the organization. Just at the moment I stepped into the office. उस time पे forum में office होता था. And I'm
I'm a big fan of aesthetics. So उस time पे the office was really nice. Yeah. And it smelled really nice too. So the entire experience and was great. So And which department did you join? I ironically I joined the strategy and planning department. Oh, finally, जो आपको चाहिए था जो department वो finally आपको वहाँ तो पे मिल वो गया. media planning था. I mean initially I wanted to join the communication planning or strategy department, but this was a lot closer to what I was chasing. But I didn't realize at that time it was going to be too number centric and too Excel centric. So that was a challenge. I mean, the first few months at MINDSHARE was tough, and I was still debating whether this is what I want to do. But then I think a couple of months later, I eased into the job and I realized got the hang of it. Then numbers started and the Excel sheets started talking, and then I saw the other side, which is comprehensive and detailed strategies and how you can change and shape the world and how you can play your role in marketing and communication. And I started enjoying it. So ये मेरी journey रही. MINDSHARE start किया, but then like most students, and this is the time when I was close to completing my MBA, or I had almost completed my MBA. So like any student, any graduate, even today when I discuss it with my students, I have taught at Zabis, and time to time मैं कभी पढ़ाता रहता हूँ या हमारे पास लोग आते हैं, तो everybody wants to have a brand side का experience. So मुझे भी वो शौक था, and मैंने कहा जी brand side जरा try करते, and I got an opportunity. I got a couple of opportunities actually. I chose one, and there was another offer I had, but then I think I self-reflected and I looked back. वो जिस तरह आपके दिमाग में एक रील चलती है कि यार how life has been. क्या वो opportunities within Pakistan थी या within Pakistan थी उस time पे. Okay, but So, आपने वो offers नहीं accept. मैं गया 2002 साल I think मैंने MINDSHARE में काम किया. फिर मैंने I took an opportunity, and then soon I realized that no यार I want to do media and communications. That was better. That previous job was better. वो better थी because थोड़ा सा मेरे अंदर वो था कि यार I mean this is more fast paced, and that's more the rich. ज़्यादा rich experience होता है agencies का. बिल्कुल, and multi, क्योंकि एक multi brand experience ज़्यादा होता है. Brand में आप थोड़ा I mean brand की job is interesting, exciting, so please don't get me wrong. I mean that's a fantastic role, but you got to see lead role. It is, and also I think you got to see कि आप की पर्सनालिटी के साथ क्या ज़्यादा सूट करता है. You own your own brand. जब आप एडवर्टाइजिंग में होते हैं, फर्म्स में होते हैं, तो आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, आप उन सबको ओन करते हैं. बट व्हेन यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर ब्रांड, देन दैट ब्रांड हैज योर कंप्लीट ओनरशिप. And hence I decided that I want to have I want to have a multi-dimensional kind of experience, and that sort of I mean, and I wanted कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में I should learn as much as possible in as short a time as possible. क्योंकि करियर के इनिशियल इयर्स में आपका फोकस सारा लर्निंग पर ही होना चाहिए. अगर आपको लगे कि आपकी लर्निंग थोड़ी सी मोनोटनस हो रही है, देन दैट्स वेयर यू नीड टू डिसाइड कि अभी इट्स टाइम टू डू समथिंग व्हिच फोकसेस मोर टुवर्ड्स लर्निंग एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स. द पर्क्स, द सैलरीज, ऑल अदर बेनिफिट्स, उस टाइम पे आप ये चीज़ें फॉरगो कर सकते हैं क्योंकि आपने उस वक्त करियर स्टार्ट किया होता है, इनिशियल इयर्स होते हैं. एब्सोल्युटली. और मुझे लगा कि MINDSHARE एंड मीडिया प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन ये ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे you're dealing with multiple challenges in a single day, and you're dealing with multiple brands in a single day, so there is a lot of information inflow, and that excited me the most कि यार मतलब एक ब्रांड के बजाय मुझे 10 ब्रांड्स एक साथ सीखूंगा. So I got greedy with that, and I really like that thing कि यार it's very fast paced, and there's a lot of information coming in, and that excites me, Oh yes. So, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि आपके माइंड में ये क्लैरिटी थी कि आपको क्या नहीं करना. So when you move to the brand side, आपको रियलाइज हो कि एटलीस्ट ये मुझे नहीं करना है, which is great, which is totally amazing. लेकिन उसमें भी लगता है ना पेनफुल तो होती है एक्सरसाइज if you leave, of course, and then come back, but that's experience, that's life, experience. I think that's part of the professional life. You take some right decisions, but मैं किसी भी डिसीजन को गलत नहीं कहूँगी. नहीं होता है, वो एक एक्सपीरियंस ही होता है आपका. Absolutely. Oh yes. So on that note, हमारी बात हो रही है आगा ज़ोहैब
जोहेब से, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइंडशेयर पाकिस्तान। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है आगा जोहेब, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइंडशेयर पाकिस्तान। सो आगा से हमने बहुत सारी बातें की अबाउट हिज जर्नी। उन्होंने फाइनली फिर माइंडशेयर ही ज्वाइन किया अपनी एक और जॉब को गिव अप करके, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि उनको माइंडशेयर में ही वो सारी एक्साइटमेंट और पैशन और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नजर आती थी एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। सो आगा, आपका माइंडशेयर का अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आई एम श्योर यू मस्ट बी वर्किंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल कैंपेन्स। अब तक तो आपने माइंडशेयर में बहुत कुछ अचीव किया होगा, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। It's been a fantastic journey. What I like the most about Mindshare and this industry in general also is that there's no choice but to wake up passionate and excited. Oh yes. You got to be on your toes. So it's been an interesting journey. It's been a roller coaster ride in many ways too. So बहुत exciting, and the best part is that you get to work with so many people, and you're not only contributing to the organization, you get to learn a lot from the people you work with, people on the client side, the suppliers, the partners outside. The Mindshare is a multinational organization, so yes, you get to learn a lot from people abroad, your region. There are a lot of trainings for everyone, and whatever is happening globally, we get to not only know of it, but we get to implement it too. So it's been exciting and nice. wonderful. So how's like the working culture वहाँ पे? Mindshare का working culture is very inclusive. We believe in diversity. Okay. It's a fun culture. Don't get any wrong impressions. We work hard too. Of course. So काम बहुत होता है, बहुत तेज पेस पे भी काम करना पड़ता है, and at the same time the time that you spend at work is very interesting and exciting. I'll give you an example. Whenever I get some time off, or I'm taking a break, I can go play darts in the office. Nice. And this goes for everyone. So the office itself allows you to have all these facilities are there. Yes. Nice. And such is our culture also. Okay, यार काम पूरा करना है, मेहनत करनी है, and you got to be on your toes, but at the same time work life balance भी होना है. And work life balance not just के आपने जो है वो शाम में सिर्फ टाइम पे चले जाना है, but even your working environment should be such where you're enjoying your work and you're enjoying your time spent at the office. Of course. So I'm sure आपने अब तक मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम किया होगा। उन कैंपेन्स के बारे में मुझे बताएं जो आपकी सबसे सक्सेसफुल कैंपेन्स रही हैं, या मोस्ट मेमोरेबल कैंपेन्स सो फार। Most memorable campaigns, there are so many. There are so many of them. Any top of the mind? Okay, so we launched Sting in Pakistan, the energy drink, Pepsi. Pepsi के साथ मेरी काफ़ी लंबी एसोसिएशन रही है, and काफ़ी इमोशनल एसोसिएशन भी रही है. And Sting की launch I think was very very interesting because it was just a test launch, but we worked hard, both the marketing sides and the media agency and the creative agency, of course. We all were collaborative. काम हुआ काफ़ी. हमने उसमें साथ मिलके हर चीज़ कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, मीडिया की फ्रीक्वेंसी एंड मीडिया प्रिंसिपल्स को हमने बिल्कुल रिक्रिएट किया. जो बुक कहती थी हमने बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम किया. बिल्कुल ऑपोजिट किया कि अगर फिलिप कॉटलर साहब या कोई भी आप प्रिंसिपल्स आप बना लें मीडिया के, मार्केटिंग के, वो ये कहते हैं तो हमने कहा नहीं जी आप कहते हैं क्योंकि तो हम बिल्कुल उल्टा काम करेंगे. ये मैं थोड़ा सा इसमें ह्यूमर ऐड कर रहा हूँ, लेकिन basically it was a different category, it was a new category, and there were no benchmarks, right? So हर चीज़ पे हमें
खुद ही अपने रूल्स बनाने पड़े और वो रूल्स जो थे वो अनलाइक एनी अदर नॉर्म थे। तो वो सबसे एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग कैंपेन मुझे वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग कैंपेन्स थी। उसके अलावा बहुत सारी अभी रिसेंटली ऑल्दो अब मैं इतना ज़्यादा कैंपेन्स में इतना इन्वॉल्व नहीं होता डे टू डे में, बट व्हाई नॉट मेरी जान अगेन पेप्सी की बहुत टॉक ऑफ द टाउन। Yes, that's an interesting one in the recent times. The recent one, yeah. I've worked abroad also, so there have been a number of campaigns that I did in Malaysia that were very very interesting. I think Those Maybank were also Pepsi campaigns या other brands? No, वहाँ पे I think Maybank काफ़ी ज़्यादा CSR करता था, तो उन activities में काफ़ी मज़ा आता था। Golf की काफ़ी campaigns थी। Those were not necessarily media campaigns, but more of thought leadership and sports ownership. Primarily golf, तो high net worth लोगों को कैसे on board करना है and all of that. So those were very exciting campaigns, and there have been plenty. I mean, I wouldn't be if I start talking about campaigns that have excited me, तो वो पूरा दिन उसमें लग जाएगा. Yeah. But these were just a few to name. And Pepsi Battle of the Bands भी revamp हुआ after many years. Like Yes. उनका जो first season था वो बहुत पहले ऑन एयर हुआ था और उसके बाद इतना लंबा गैप, और उसके बाद MINDSHARE was again leading that wonderful campaign of Pepsi. So how was that experience? Wonderful. I think Battle of Bands जो first time हुआ था, that was a major success, not just for the brand, but I think उसने पूरे इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में आप बड़े बड़े हमारे जो भी बैंड्स उठा के देख लें, वो सबका कनेक्शन जो है वो बैटल ऑफ बैंड्स से एटलीस्ट 90% का कनेक्शन बैटल ऑफ बैंड्स के साथ, पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स के साथ जुड़ता है। एंड इसी तरीके से जो हमने जो सेकेंड टाइम पेप्सी ने उसको रिवाइव किया, आई थिंक दैट टू वाज एन एक्साइटिंग जर्नी। एंड so your team was also involved in the conceptualization stage? Yes, we have pitched it a number of times. Okay. We debated it a number of times. We tried to convince the client a number of times, and when they finally decided, and obviously there was a creative agency involved. So when they decided that this is what we want to do, we took full ownership of it, and we did whatever we could to play our role in its success. That's great to hear that, क्योंकि Pepsi I think last 4-5 years में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। ऑन एंड ऑफ कैंपेन्स आती रहती थी, लेकिन आई थिंक दीज टू कैंपेन्स वर most talked about, why not मेरी जान and Battle of the Bands like I said. So great. कैसा लगता है इतनी बड़ी campaigns का part बने रहना जो पाकिस्तान भर में इतनी famous रही हैं and globally as well, and they are producing such young talent, और सारे singers जो अब अपने अपने concerts कर रहे होते हैं, उन सारे singers को एक break देना, एक ऐसा platform create करना. How does it feel to be a part of such an amazing campaign? It feels good, but I never looked at it this way. What I feel good about is that at the end of the day, the industry standards are being uplifted. Oh yes. And people get to benefit from it. चाहे वो singers हों या I mean ये पूरा ecosystem है, वो है. Plus I think the other thing is when we innovate, we are also contributing to the image of the brands, because these are brands that are known internationally. These case studies go, and even we are part of an international and a multinational setup. When our case studies go abroad, that also sort of contributes to the image of the country. So that too is something that we feel very proud of. Oh yes, definitely. So हमारी बात हो रही है आगा ज़ोहैब से, who is the managing director of MINDSHARE Pakistan. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है आगा ज़ोहैब, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइंडशेयर पाकिस्तान। मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। सो आगा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि ब्रांड बिल्डिंग कितनी ज्यादा इवॉल्व हो गई है। माय पॉइंट इज कि पहले हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स थे, ट्रेडिशनल मीडिया पे ज्यादा फोकस होता था, अब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है इनटू डिजिटल मीडिया। तो ऑफ कोर्स आप लोगों का वर्किंग एनवायरनमेंट, ट्रेंड्स, इन सबको फॉलो करते हुए किस तरह से
आपने इस चेंज को अडॉप्ट किया है या अभी भी चैलेंजिंग है, जिस तरह से डिजिटल मीडिया इतना फेमस हो चुका है इतने शॉर्ट टाइम में? देखिए, प्रिंसिपल्स तो नहीं चेंज हुए, प्रिंसिपल्स तो वही हैं. ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाता है, ब्रांड फनल भी मोर और लेस वही है, बट tactics and obviously mediums to approach the consumer has changed and has evolved and will continue to evolve. Digital bhi jab you would know and everyone knows when digital started uski shape and form kya hoti thi aur aaj wo कैसे कन्वर्ट हो चुका है और क्या क्या बन चुका है. Right, we started off with www and that www soon became www-.com to mobile phones, smartphones, to various apps on phones, to connected devices, to internet. I mean, it's internet of life. I mean if you have to put it in one words, your life revolves around digital and internet and all of that. That's a medium. You must have seen how your mother behaves now versus 5 or 10 years ago. How she consumes her cereal, favorite cereals, or consumes consumes watches her cereals TV पे, स्मार्ट TV पे या YouTube पे and all of that. सब कुछ बहुत easily available हो चुका है लोगों के लिए. लोगों को जो चाहिए उनको उसी टाइम पे वो शो भी मिल जाए, वो म्यूजिक, एनीथिंग. पहले लोग सर्च करते थे, वेट करते थे. They used to wait for a whole week next episode के लिए. अब क्या करते हैं लोग, एपिसोड उस तरह फॉलो नहीं करते टीवी पे, YouTube पे सारी एपिसोड्स एक साथ देख लेते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर ओवरऑल पूरा चेंज हो गया है. लोगों के हाथ में, उनके फोन में, they have the entire world and customer is the king right now, क्योंकि सब कुछ वो अपने हिसाब से कर रहा है. और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन के सामने आई है. क्योंकि जिस तरह की टारगेटिंग आज आप डिजिटल के थ्रू कर सकते हो वो टेलीविजन पे नहीं कर सकते थे. जितने छोटे छोटे ब्रांड्स आज एडवर्टाइज कर सकते हैं और अपने लिए छोटा सा नीश बना सकते हैं एंड अपने आप को रेलेवेंट कर सकते हैं और अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं अमंग्स कंज्यूमर्स. इन द पास्ट इट वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट. इसकी वजह से छोटे ब्रांड्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं बिकॉज उनको पता है डिजिटल मीडियम में उतना एक्सपेंस नहीं होगा जितना traditional media. And they go for digital media, which is the easy way out to reach customers directly. Absolutely. तो ये आपके लिए भी challenging होगा of course. अपने clients को जब आप लोग pitch करते होंगे, अब budget allocation different होती होगी, traditional mediums पे उतना budget नहीं होता होगा जितना पहले होता था, या is it still the same? Digital का roughly 25 to 30%, which has increased over the years. That's the share, right? In the mix. So digital has increased and digital share has increased significantly in the last few years. Television is still relevant. Thanks to sporting events also, television is growing too. Both in terms of viewership. Especially in Pakistan, the cricket fever, which is always on. Absolutely. Cricket is the savior. In a lot of ways. In a lot of ways. I think that's one of the most, passion points for all our generation के. वो चाहे और कोई भी चीज़ skip कर दे, cricket नहीं. Cricket की fan following, cricket का craze, बल्कि it's increasing over the passage of time. Very true. And even football. You would be surprised to know that FIFA World Cup's rating were as high as some of the cricketing events, this time around, especially knockout matches ke time pe. So there was that too. I think other sports too, live sports, and I think the key here is कि जिस भी tournament या जिस sport की, apart from cricket तो हमारे बिल्कुल culture का हिस्सा है, हमारे blood में, but उसके अलावा भी जो event global scale पे popular हो and there are big stars, cricket is also popular because we love the stars and we love the sport. Definitely. Wonderful. So आका, हमने बहुत सारी बातें की about MINDSHARE, about your professional journey. अब कुछ अपने बारे में बताएं as a person, your hobbies, likes, dislikes, free time में. वैसे तो I'm sure आपको free time मिलता नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन जब भी आपको कभी मिलता होगा तो free time में क्या अच्छा लगता है आपको, क्या activities हैं? Free time में देखिए मैं बहुत I'm into sports. I have been since childhood. तो मैं अभी भी मेरे कौन सी स्पोर्ट खेल रहा हूँ ये बदल जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स हर दौर में कोई ना कोई स्पोर्ट खेलता हूँ. तो पहले क्रिकेट होता था, अब क्रिकेट इज very time consuming and has become a little boring for me because I want fast paced action and वो time availability of time पे भी होता है, तो वो ज़रा कम चाहिए होता है. तो I got into racket sports. I used to play squash very regularly. I still do
too. Nice. But now I play table tennis more. So वो 1 घंटा आधा घंटा दिन का, and then I play soccer, football with my son too. Oh, lovely. तो वो कभी I'm also into gaming. तो कभी PS5 पे खेल लिया and all of that. पहले I used to be on the mobile phone too, but now I don't play on the mobile on the phone. But PS5 पे कभी मैच कर लिया, कभी किसी दोस्त के साथ खेल लिया, कभी ऑनलाइन खेल लिया. कोई दोस्त मुल्क से बाहर है तो ऑनलाइन मैचेस कर लिए and all of that. Wow, how interesting is that? And then I like to spend time with my family. I have 2 kids, my wife and family in general, friends. Family should be your number one priority. No matter how busy you are, कितना भी आपका busy schedule हो, कितनी भी आप senior position पर हो, but family का time पे कोई compromise नहीं होता. Absolutely. और वही चीज़ आपको सब sane भी रखती है. Yes, that's true. Glad to hear that. So, Agha, जो हमारे future marketers हैं या future advertising professionals, students these days, like you said, you're also teaching. उन सब के लिए और हमारे listeners के लिए जो अभी तक हमारा शो सुन रहे हैं, उन सब के लिए आपका आज का की मैसेज क्या होगा? देखिए, मैसेज अब मेरे बहुत सिंपल से मैसेजेस होंगे. एक तो honesty always pays. Oh yes. ठीक है, it pays in the long run and in the short run too. ठीक है. So वो छोटे छोटे ups and downs पे बंदा फोकस ना करे, honest रहे, honest to yourself, honest to your surroundings and everyone. I think that's the most important thing. और उससे सक्सेस भी आती है मेरे भाई. Oh yes. ये भी नहीं है कि सक्सेस नहीं आती. Yes. कि बच नहीं जाओगे. अगर छोटा सा अगर झूठ बोल दोगे तो वो बचने का वो फायदा नहीं है. फायदा तब है कि जब आप ऑनेस्ट रहो और फिर भी आप सक्सेसफुल रहो और फिर आप जीतो. ऑनेस्टी अपने साथ और अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने सिस्टम के साथ, दैट्स नंबर 1. एंड ट्रस्ट मी, वो आपको ज़रूर सक्सेस दिलाएगी. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, स्मार्ट वर्क होता है. आप उस शॉर्टकट को स्मार्ट वर्क कहने लग जाओ और आपका काम करने का तरीका भी बदल जाएगा और रिजल्ट्स भी बदल जाएंगे. सो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, दे गो हैंड इन हैंड. कोई ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है कि या तो मैं स्मार्ट वर्क करूंगा या मैं हार्ड वर्क करूंगा. यस, मंकी वर्क ना करें. मंकी वर्क आई मीन कि आप खामखा में किसी चीज़ को एक बस किए जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. बट हार्ड वर्क के बगैर, मेहनत के बगैर कोई रिजल्ट नहीं है. लेकिन वो भी मेहनत का ही नतीजा है कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, बिकॉज यू हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स एंड यू नो हाउ टू डू इट मोर एफिशिएंटली, राइट? Thank you so much, Agha. Those were lovely words of wisdom, and I'm sure हमारे listeners ने बहुत कुछ सीखा होगा आज की एपिसोड से. So thank you so much for your time today. और हमारे शो के लिए टाइम निकालना इतने बिजी स्केड्यूल से, उसके लिए again once again I'd like to thank you for that. I hope आपने आज का एपिसोड एंजॉय किया. मैंने तो डेफिनेटली बहुत एंजॉय किया आपसे बात करना. Thank you very much, Sarah. Thank you for inviting me. I thoroughly enjoyed it. I don't know how much Honestly, you time का पता भी नहीं enjoyed it चला. and how your listeners would have enjoyed it. I apologize if I bored you guys, but Not at all. but I thoroughly enjoyed it. Not at all. देखिए, जब आपको टाइम का पता नहीं चलता, it means के the conversation is actually very interesting. Thank you so on much. that note, listeners, I hope आपने हमारा आज का एपिसोड एंजॉय किया होगा. इसी के साथ मैं आपकी होस्ट सारा हसनैन अब आपसे नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ ऑन ब्रांड बोलता है. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज.